So good morning everybody, myself Acharya Vishvendra. I was just discussing a question on current in the last video you must have seen. So now it is related to the very same question, the question number 4. It says average current. So average current is delta Q by delta T. And we have seen that delta Q was 10 coulomb and time interval was 2 minus 0 second. So for the calculations, average current comes out to be 5 coulomb per second or 5 ampere. Then in the next question we need to calculate instantaneous current, which is dq by dt. So just differentiate the equation. We have 2t plus 3. Next is current at t is equal to 1, so substitute t is equal to 1, so current will be 5 ampere over here. Then we have a graph of q and t. So suppose this is the graph and there are 3 points a, b and c. Suppose I choose a point a and draw tangent on the graph at this particular point. So suppose angle here is theta, here angle is alpha. So current or dq by dt is the slope of tangent, which is either equal to tan theta or minus of tan alpha. So this is how we can calculate the instantaneous current from the charge and time graph. Now there is a point of concern that if current, under what condition current is positive, negative or 0. So we have IA is equal to tan theta. So that means if theta is greater than 90, so tan theta will be negative. That means current will be negative in that case. Whereas current will be 0 if theta is equal to 0, and current will be positive if theta is less than 90, so which corresponds to the point C. So we have learned that how to calculate current from charge versus time graph. So this is the analytical point of that. Now let's see things into one more aspect. So suppose you draw the QT graph as shown in the figure. There is a point P and you draw tangent on the point P, and suppose this angle is theta and this angle is alpha. Then IP is dq by dt, which is either tan theta or minus of tan alpha. Now theta may be less than 90 degree, maybe 0 or 180, maybe 90, maybe greater than 90. So if theta is less than 90 degree, then tan theta will be positive. That means IP will be positive. So it's graphically it can be shown like this. If theta is 0 or 180 degree, tan theta will be 0. So IP will be 0 as shown here. If theta is 90, then tan theta will tends to infinity. So I will tends to infinity as shown over here. If theta is greater than 90, tan theta will be negative. So I will be negative as shown over here. So you have seen that we can analyze the charge time graph in terms of slope of the tangent or the slope angle, and we have different cases according to which current can be positive, negative, 0, infinite, according to the angle which the tangent made with the time axis. So this is analytical perspective of the graphs that we have done. Let's solve one more question on this. Suppose ये QT ग्राफ आपको दिया हुआ है and the first question is you need to find Q at t is equal to 5. तो यहाँ पे आपका ये आप ग्राफ से रीड कर सकते हैं, it is 10 coulomb. Then Q at t is equal to 8, again 10 coulomb. Then charge at t is equal to 10 second, you can read from the graph, again 10 coulomb. Then Q at t is equal to 12, again you can read from the graph, it is 0 coulomb. देन क्यू एट टी इज इक्वल टू 3. तो 3 जो है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. तो मान लीजिए टी इज इक्वल टू 3 पर मुझे एक करंट निकालना है, तो मैं 3 पॉइंट से एक लाइन उठा देता हूँ. तो ये जो हाइट है वो करंट को करस्पॉन्ड करेगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल्स, स्मॉलर एंड द लार्जर वन. तो इस छोटे ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि आई अपॉन 3 जो है वो टेन थीटा के इक्वल होगा, और टेन थीटा जो है वो 10/5 के इक्वल है. तो I/3 आपका 2 है, तो करंट यहाँ से 6 एम्पियर आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्यू एट टी इज इक्वल टू 11. तो टी इज इक्वल टू 11 कहीं यहाँ होगा. तो सेम तरीके से कैलकुलेशंस करके आप टी इज इक्वल टू 11 पर भी करंट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसका आगे देखते हैं. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस में ये 5 एम्पियर यहाँ से करंट आ जाएगा. नेक्स्ट इज डेल्टा क्यू, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 5. सो डेल्टा क्यू हो जाएगा आपका Q5 माइनस Q0. सो ये 10 माइनस 0 यानी 10 कूलम आ जाएगा. नेक्स्ट है एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. सो दिस इज 10 कूलम बाई 5 सेकेंड. सो 2 कूलम पर सेकेंड, ये 2 एम्पियर यहाँ से करंट आपका आ जाएगा. नेक्स्ट इज डेल्टा क्यू, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड. सो दिस इज Q12 माइनस Q0. इसको सॉल्व करेंगे, 0 कूलम आपका आ जाएगा. नेक्स्ट है आई एवरेज विच इज़ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. सो इट विल बी 0 एम्पियर. नेक्स्ट इज करंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो इट इज़ डी क्यू बाई डी टी विच इज़ टेन थीटा.
तो यहाँ से आप एक स्लोप एंगल डाल दीजिए, तो t इज इक्वल टू 2 पे जो करंट है वो टेन थीटा आ जाएगा आपका, यानी 10/5 यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट इज करंट एट t इज इक्वल टू 8। सो t इज इक्वल टू 8 पे आप देखेंगे तो इसमें एंगल 0 है, तो यहाँ से करंट भी आपका 0 आ जाएगा।